Hello. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, Am I sir. audible now? Yes, Okay. sir. Sorry, there's a network initially in Bombay. I'm still in Bombay, so there's a lot of network that can be seen. Yeah. So I think so now it's perfect. Can we move ahead? Sure. Yeah, go Yes, ahead. sir. Yes. Okay, great. Yes. So ma'am, would like to know which stream students are there from the management, engineering, or what is the stream, and basically what is a motto? Like it's an entrepreneurship, right? So basically they were working on the startups, they were working on the innovative ideas. So we like to know about it little more about your ESL of entrepreneurship. So we have students from engineering and management as well as from agriculture branch also. So and yeah, yes, sir. We have also incubation center in the college, and students are very much interested in startups also. So you can guide them how to start your journey. Like you can first you tell your journey from the beginning, from where you have started, and then you can guide them step by step. Definitely, ma'am. Definitely, yes. So can we start with the session? Yes, sir, sure. Yeah. Good morning, everyone. So good morning to we have the weekend Saturday, right? And it's the end of the week, and you guys end of the week, so little bit laziness and tomorrow you are going to have a Sunday. So Sunday you are like to have a free time, so where you can roam around and have a good time with the friends and all. So let's talk about so as the topic suggests, my success story. Okay, so it's not my success story. I think so. Everyone has its own success story. आप सबकी एक कहानी होती है, right? You guys have your own story, and depend आप उस कहानी को कैसे लेके जाते हैं. Okay, someone like me has like me. I started my journey same. I was in school, studied in a school till class 10th. 11, 12, I did from Kota, Rajasthan, that is from IIT preparation. So at that time, I was just 17 years old, and 17 years old, I just went to Kota for the IIT preparation. And you guys know about Kota, okay? So you might be seen the series, you might heard about it, and the culture is totally different. So a lot of students are visit to Kota for the IIT preparation, and it's I think so from Chandigarh itself, Mohali, Delhi, Jaipur, all over the India, people came to Kota for the IIT preparation. The main motto of this is basically to crack the IIT examination, G mains and G advanced. So basically, if I talk about nowadays, so even I was in the same race. So after the end, I was very motivated toward my ambition. I was very passionate, and I have to do something in my life. So that's why choosing the right career, right path is definitely what I want. Okay. And after convince my father, I convinced my family, this is what I have to do. And then I just went there after 10th examination. And one thing I would like to tell, I was not the very if I talk about myself, I'm not a very, you can call it as a topper or somewhat like that. I was an average student, students of 80% percentile. So I was average in the study, but I was very motivated. I was very motivated toward my ambition, toward my career. So that's why I chose to move ahead to Kota. Okay. And 2 years we studied there, and to be frank, the culture was totally different. It's not like the normal 11th, 12th culture. The culture is like we have to give time to our studies. 6 hours coaching, 6 hours self-study. Every day we have to study 10 to 12 hours. So this is what our aim. Okay, we used to make a proper calendar, study schedules and everything. And then we need to schedule a proper regulations. And if I talk about the faculty, they are the IITian faculties. And to be frank, there's a lot of competition that can be seen. And looking at all this competition on all these study notes, all this the material that the faculties how they talk, how we are getting the concept. Okay, so if I talk about 2 years was the most useful time for me, because I learned many things. And definitely learning is not about learning in terms of physics, chemistry, maths. Learning in terms of your life. Okay, I learned how to be self-dependent, how to give times, how to manage time management, how to be focused,
how to be like the more curious, the more ambitious, the more learning stuff. I just focus on my stuff in 2 years. So after the 12th examination, there was a time when we have given the IIT mains and IIT advanced. At that time, it was introduced. And to be frank, I was not able to crack that examination. Even I'm not able to clear G mains exam. So so to be frank, after giving 2 years, I was not able to achieve what I want. Okay. So at that time, we call ourselves like, even you guys, you guys work on your stream, you guys work on your passion, you guys give time to everything, right? But somewhere it's not able to, you are not getting that success what you want. So we call it that failure. Okay. So अगर मैं बात करता हूँ, this is not a failure. This is not a failure. Okay. Why? मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ failure नहीं है? This is because you have given your 100% there. Your valuable time, your resources, your passion. You learn many things from there, right? Results is a part. Results आपका एक part होता है, decide करता है कि आप whether आपने किया कि नहीं किया. What is that? See, even if I saw there's an MCQ examination. MCQ examination cannot decide your future, right? That examination, if I talk about I am not able to clear my exam, I should like I can't do anything. I should demotivate myself. It's like everyone has their life. Okay, some of you guys in second, third year, so you guys also prepare for the examination, and sometimes you're not able to do that. Okay, so the main point of its failure is a stepping stone of success. Failure आपको सिखाता है कि आप लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं. Because अगर हमारा लाइफ में सब कुछ बेटर होता है ना, तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, right? If I talk about you guys have a very stable life, a life that is you have everything. आपको जो चाहिए, regular like you guys are in college, so you are getting regular regular the your parents are taking care of you. You are able to get a good education and all this stuff. Ask to the person who don't have that education. Okay, a person who is willing to take the education but is not able to educate himself. Okay, a person who is not able to get I think someone has shared the screen. Can that? Yes. Someone has shared the screen. I think so. Right. Yeah, Gaurav Shukla, your screen is shared. Okay, please drop that. Gaurav Shukla. Yeah, I think so. By mistake, it has been done. So please make sure that while in class. Sorry, sir, I have removed him. No, that's fine. I think so. He is not aware about the things. That's fine. So yes, what I'm talking about is failure is the stepping stone of success. Okay. मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? Because see, when you fail, you realize the things. Okay, what is the leg behind? आपने क्या कमी किया था? What has to be improved? And what is the reason why it has been happened? Okay. So there is always a lesson in a failure. Success cannot teach you what you want, but failure can teach you what you want. Okay, so I think so. Failure is important in life to be successful. Okay, so then after 12th, it was really disappointing for me. But everyone, like, I was also disappointed. So I thought to give 1 or 2 more time examination. Then I thought, like, let's go ahead with the things. I taken the I did college in Maharishi Markandeya University, that is in Ambala. So I have taken the admission there in electronics and communication engineering, the branches. And first year is as you understand, the first year you go to college, and it was like I think so. In COVID, you missed the first year and second year, right? You guys are in at home having online classes, so you guys somewhat missed the college days. Okay, because when we go to college, we are in hostel. We have a lot of friends from different states, and we share different we talk to them. We understand their culture. We understand about them, and say meanwhile we understand about the campus, and we faculty interaction. These all things that we can see. Okay, so somewhat you guys are missing it. But I think so now the things are normal, and you can go back to your colleges. You can have an interaction with the friends. Like college life is really a life that we always look for. Okay,
So the first year is also common for me. First year we went to the college, we understand about the college and our friends and everything. Faculty was good. So when I went to college, I always have a motto like when I went to college, the motto is basically to get the job after fourth exam, like fourth year, right? After fourth year, I will get a good placement and placement in terms of when we see the college placement. Okay, what is the previous placement they offer? And I was the same person कि हाँ चलो यार फोर्थ ईयर के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा एंड उसके बाद जॉब ले लेंगे और रेगुलर लाइफ हमारी जैसी चलती है वैसी चलेगी. बट व्हाट हैपेंड इज आफ्टर द फर्स्ट ईयर, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ईयर के बाद व्हेन आई वेंट टू सेकंड ईयर में क्या हुआ कि सेकंड ईयर वाज प्रीटी गुड. आई यूज्ड टू टेक द क्लासेस. ओके, so as I said, I'm a self-dependent person. So I used to take the classes. I used to provide the classes for the 11th and 12th students near that itself because the students came to me. I just give to 2 or 3 hour daily classes. मैं उनको 2 से 3 घंटे वहाँ पे मैं classes देता था. The motto of the classes is basically I used to get a lot of time. Okay, and I was the person who never like I use the time and I utilize the time. I think that time is very important for me, and still time is what I value. Okay, so in your life you have to value something, and in my life I value the time. Okay, so after college 3 to 4 hour I have to give the classes to students, and that was like I just continue 5 to 6 months. The turning point in my life is the turning moment. You can see turning point where I got an internship. After second year I got an internship in Mumbai itself. So I think so second year ke baad we have to do the internship, right, in engineering. I think you guys also got a chance to do the internship anywhere. Okay, and you will also get a chance in third year itself. So same way I got a chance is after second year to get an internship. So there is a website called Internshala. Okay, in Internshala I applied for the internship, and after like applying for 5 to 6 internship, I usually get a call from one of the company, Riddler, it's an app. Okay, and company is Birdseye System Private Limited. I got an internship there, and I get a very good stipend there. So I came to Mumbai. Okay, and the internship is the internship duration is only 1 month, but the major learning I did, I just want to share the learning that I did from my internship. And internship, it's my first job. Okay, so the major learning of internship is when I came to internship, we have to start the new project. So let me talk about the project. Okay, the project is basically we have to work on the Trimax device. Trimax device is that device. So basically, if I talk about you might be traveling in a bus. So bus, the bus person, you get a ticket, like आपको ticket देता है, a ticket. तो जो device होती है जहाँ से आप ticket काटते हैं, that is called a Trimax device. बॉम्बे में चलता है. So our major job is to fit Wi-Fi and battery, external Wi-Fi and battery on that device. Okay, तो उससे क्या होगा कि हम लोग application के through डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट. वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी और ऑनलाइन पेमेंट कोई भी कर सकता है और टिकट भी वहां से कलेक्ट कर सकता है. सो वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट and we are in the first phase of starting the project, and I was as a junior engineer, I joined there. So we used to work in a night. Okay, so job timing was 8 p.m. to 4 a.m. in the night. Okay, so we used to go to bus depot. But अगर आप you guys know about Mumbai, there is a bus depot. जैसे आपके वही bus depot होते हैं. I used to go to the bus depot, and then bus depot we started working on that device. Okay. So what actually happened is we started 3 to 4 days. The work has started, but after 3 to 4 days the device got a disturbance. Like disturbance in a term of if I talk about वहाँ पे कुछ डिवाइस हीटिंग होने लगे, कुछ में वाईफाई कनेक्शन के इश्यूज आने लगे. So there is a lot of failure in the device. Okay, so to be after that we used to call in our office and we used to discuss why this problem has been occurred. Okay, so I was the main part there who discuss about these ideas, and we used like I was an intern there, but yes, the best point is I work with the CEO, HRs, technical head, and top faculties, sitting with them and discuss about the problem. And after 2 or 3 days, the problem has been resolved. Okay, so we are able to track all the problems. And after a week, everything is fine. And now we assign a person to different depots, and they're working on these devices. So after 10 to 15 days, they call me in the office, and I was a trainer there. Okay, so I used to train all the
students who were pass out, they come to me. I train them about the work. I train them how the things are going on. So basically, after 15 days, I was a trainer there. So even a week, I started continue like as I provide training to them. And in will by I done the hiring also. So पूरा report बनाना, सबको hire करना, and working on the technical stuff. It's all happen in a month. So after in a month, starting as a junior engineer, I was like everyone in office knows the Vikas Mishra, and this is the project that he started. Okay, within a month, I was doing pretty good there. So after a month, my college is going to start. So I just back I back to my college. Okay. So you said like you guys understand this is a very normal stuff. Okay. I think so. You guys have experienced this in your life. Somewhere you work, you got a good recognition, and you come out. Okay. But what I learn, see, I always learn from my life. Whatever I do, I learn from it. Okay. So major learning from this experience is what I take it. Okay. So the major learning is I understand that I understand my potential, I understand my skills, I know myself better on that point. Okay, so I understand within a 1 month from a junior engineer, I can become a trainer. I can as a project manager, I can guide everyone. So I understand I have more capabilities. Okay, capabilities in terms of working professionals. I can work even 15 to 16 hours per day. I have an innovative idea. So at that point, I evaluate myself. Okay, I evaluate myself means I understand my potential, my skills. Okay, so I understand that as I have innovative ideas, I have an innovative concept, I'm a hardworking, I can work 50 to 60 hours. And looking at all these things, I decided that I can be a good entrepreneur. At that time, after that internship, I analyzed myself. After analyzing myself, I got to know that I have a good potential as an entrepreneur. Yes. Yes, Rohit, you can ask me the question. Yes, I will like it's a very interaction session. So Rohit, you can ask me the question if you have any question. You just raise the hand. Yes, Rohit, you can ask the question. Yes, definitely. You can unmute yourself. So, Rohit, do you have a question or by mistake the raise has been hand? So I have asked him to unmute, but he's not able to unmute. That's fine, ma'am. So you guys, if you have any question, meanwhile, अगर आपको कोई question है, आपको ऐसा कुछ लगता है, you can raise your hands and definitely we like to be very interaction session. Okay, this session is not about your college. आप जैसे class में हम लोग online classes लेते हैं. The main thing is a very interaction session. You guys have to interact with me. You need to understand. You need to understand your points. You can give your points like whatever the problems you are facing in your college, in your professional life, or in your career life, you can discuss with me. Okay, so anytime if you feel like something, raise your hand and we can discuss on that part, right? And I want very interaction session. You guys should be interacting with me. Okay, so when you interact, you learn a lot of things. Yes, Saurabh, you can ask the question. Yes. So Kritika is also asking that which things are asked in the engineering internship interview. Okay, so how I internship how I've given the interview, right, during my internship. So if you guys want to internship, there is a site called Internshala. Okay, Internshala, this is the app also and this is a website also. You just go to Internshala, you can see a lot of internship opportunities. Okay, you just need to apply for internship, and once you apply for the internship, your resume is good. So you guys get a call from HR. Okay, and once you get the call from HR, then they will schedule the interview. So yes, let me talk about how I face the interview. So it's basically a technical stuff. As I am from electronic communication engineering, so they asked me the technical stuff. Okay, so technical stuff. If I talk about what is a diode and what is a capacitor, so this is a basic. They just want to know whether I should know about electronics or not. Okay, so they asked me the basic electronics question. I just explained them about electronics terms as I was in second year, so they don't expect much from me. So whenever you guys are giving the interview,
interview knows what is the position of that particular person. If the person is second year, he knows that he might have a knowledge of first year and second year. So he will ask the basic question of first and second year. What is diode, how the electricity pass, and what are the basic things are there. This is the question that they are going to be put. Tell about yourself and what basically you do. So the purpose of exam, see, when you do the interview, basically the person is basically not about your knowledge. He wants to know how, like, what is your confidence, how you talk with them, how you know the basic things. Okay, so he just never understand that this person can learn, he has the confidence, and if he come to us, we want him, like, whatever he learns, he can do output, like we can get the output. So this is what the basic assumption of HR they have in mind when they hire the interns. Okay, because they never don't expect much from the interns. Because they understand that interns is a helping hand for us. Okay, so if you give the internship, just have a good confidence. Vikasa, you are unmute. Vikasa, you are unmute. Yeah, now, yes, ma'am. Yes, so just be confident enough when we are giving the interview, and if you don't know anything, it's okay. Just tell them I don't know, but I'm eager to learn, and definitely I can learn. Or if you don't know any answer, just tell them I don't know it. Yes, that's it. Okay. Yes. Kriti, you so want to ask something? Kriti, yes. You want to ask something? Kriti. Yes, Kriti, you want to ask something? You can unmute yourself. Yes, is there any question? She has written in the chat box, but she is not answering right now. Yeah, ma'am, you can tell me what is the question. Sir, I need to check. Yeah, is the expense of your Mumbai ticket is from the company, or you have to pay it for yourself? Okay. This is a good question. But to be frank, I need to pay for myself because I'm getting a stipend from their end. Okay, and the stipend you only get once you get the salary after a month, so you need to pay for it. Okay, so it's not a big deal of paying the train tickets and all, because you are learning from there. As an intern, you always have a mind that I need to learn a lot of things, and it's a starting of your career. So don't focus on that money part at that time. Right? Yes. Can we go ahead? Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah. Great. So this was my internship, and I learned a lot of things. Okay. I learned a lot of things about the basically knowledge, and basically I learned for myself. Okay. I evaluate myself. I understand what I am, what is my potential, what is my skills, and what I can do in your life. That is very important. Okay. So for every whatever you guys do, okay, you guys are in you are good in every stuff. Like you were good in dancing, you were good in singing, you were good in other stuff, organizing, management. So whatever you do in the activity in the college, whatever you do at your 11, 12 till now so far, just try to understand what you are good enough. Okay, what skills you like, what actually you're interested, and what you want to go ahead. So अगर मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं, कैसे आफ्टर सर्टेन टाइम, अगर मैं आप 1 घंटे बाद में से क्वेश्चन पूछेंगे, सर हाउ टू डिसाइड मेरा एम्बिशन क्या है, मुझे करना क्या है, कैसे अपने करियर को डिसाइड करते हैं? यू गाइस हैव दिस क्वेश्चन, राइट? बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग खत्म करके बाद दे डू द पोस्ट ग्रेजुएशन, दे डू द जॉब, एंड आफ्टर 5 to 6 years they left the job and they are in different domain, right? So ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि हमें अपने पैशन को कैसे पता चलता है, हमने हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू. बहुत से लोगों को ये नहीं पता हम करेंगे क्या, राइट? और इसी के चक्कर हम बहुत से टाइम वेस्ट कर देते हैं. सो ये आपको कोई सपने में नहीं पता कि आपको करना क्या है, या आपको कोई नो वन इज देयर टू गाइड यू व्हाट यू हैव टू डू. हम लोग क्या करते हैं, ही इज अ ब्लॉगर, वी हैव टू डू ब्लॉग, ही इज अ डिजिटल मार्केटर, हम डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं. वो इंजीनियरिंग करके ये कर लिया तो हम भी वो कर लेंगे. सो दिस इज हाउ द पीपल चूज द करियर. ओके, 90% पीपल आर डूइंग द सेम फेज. किसी के पापा ने बोल दिया आप अपनी फील्ड को चूज कर रहे, हमने किसी को देखा है, हमने अपने ब्रदर को देखा है, कजिन को देखा है, ही इज गुड, ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी, चलो हम भी करियर ले लेते हैं. सो पीपल चूज द करियर नॉट बेसिस ऑन देयर इंटरेस्ट, देयर पैशन, देयर स्किल्स.
They choose on the basis of perception they have in mind. Okay, they choose कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने बता दिया तो हम लो लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो कर रहे हैं हम वो करेंगे, हमारे कजिन्स ने जो किया हम वो करेंगे, बिकॉज पैसे कमाने को मिलते हैं. बट इट्स नॉट दैट. ओके, दे लाइक दैट व्हाट दे डू. आज when I'm to digital marketing, I'm as an entrepreneur, I'm a businessman, I like it. That's why I do. Let me talk about Sachin Tendulkar. Okay, we know that he's a great cricketer, but tell me, if you ask Sachin Tendulkar to sing a song, whether he will sing the song? No, he will not sing a song, right? Let's talk about Lata Mangeshkar, whether she can play the cricket? No, she will not play a cricket. So why there's a difference in cricketer, singer, and why this all difference can be seen? See, whatever Sachin Tendulkar is doing, he is best in that because he liked that. Okay, he started his career in like 6-7 years. He started working as he started playing cricket. Why? Because he liked cricket. If you like something, you are dedicated for that point. आज आपकी जो faculties है, जो teachers है, why they choose their career as a faculty, why as a teaching faculty? Because they like it. When you like that job, when you like what you're doing, you do with all your passion, with all your interest, and you learn from it. And you gradually, what happens is, you don't never bore about that profession. हम bore नहीं होते, right? There is a word called bore or there is a word called progress. जब आप कुछ करते हो, आपको interest है, passion है, आप उसको और curiosity से करोगे, उसके बारे में और भी interest लोगे, and that's called a success point there. आपको तब success मिलती है. Sachin Tendulkar is very good in cricket. He plays cricket over a life. Now he's great. He's like whatever you want to achieve in life, he get all these because cricket was his passion. So when you adopt your skills, your interest as a passion, definitely you're going to be success in your life. Okay. If I talk about the great singers, they are actually good in singing. So the fact is, even they're not good in singing, they like it, they will try to improve themselves. अगर मुझे कुछ चीज पसंद है, मुझे कुछ अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली मैं उसको और बेटर परफॉर्म करूंगा. ओके, एंड आई थिंक सो इन दिस सेशन, आई थिंक सो देयर इज 200 plus students. You guys have the particular skill set. You are particular good in particular field. ओके, कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कोई बिजनेसमैन लाइक किसी को इनोवेटिव आइडियाज बहुत अच्छे हैं. यू गाइस क्रिएट लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडिया. Some of them are good in singing, some of dancing, some of they were good on the technical stuff, some of good in the other on domain. Okay, some of like the technical stuff, like the marketing stuff, like domain, internet, all these things. So you guys are good enough in certain your field. Okay, you guys are doing a lot of stuff. But something what happened is you are not able to do like that, right? So आप career में adopt, take it ahead. Okay, आपने उसको किया किसके लिए किया? As an interest, right? You did, it was your interest, right? It was a passion. हम लोग बहुत सारे लोग schools में बहुत medals पाते हैं, right? The medals you receive in the school is like running, athletics, sports. बट क्या होता है, हम एट सर्टेन टाइम वो जो हमारे अंदर स्किल्स है, जो हमारे टैलेंट है, हम उसको लाइक वी आर नॉट डूइंग इट. एट सर्टेन टाइम वी स्टॉप दैट स्किल्स. ओके, वी स्टॉप व्हाट वी आर डूइंग एंड वी कंटिन्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन. तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारे स्किल्स है, जो पैशन है, कहीं पे रह जाता है. सो द पर्पस ऑफ ऑल दिस थिंग इज बेसिकली यू गाइस टू नो व्हाट यू आर डूइंग. आप क्या करते हो, आपको जानना जरूरी है. व्हाट इज योर इंटरेस्ट, what is your passion, what is your skill set, right? So let's move ahead. So this is what I came to know about myself, and after knowing about myself, then I decided, yes, I'm a good as an entrepreneur. I should start my own business. And then I learned about digital marketing. I just come to know about digital marketing somewhere else. I just keen about learning. I just learn about it through blog, through videos, through all the different channels. And usually within 1 or 2 months, I understand all about digital marketing. And so it was a time like 2016. Okay, in 2016, I came to know about digital marketing, what the things are there, how to do marketing and all this stuff. So December 2000, and I got an idea that I should start my business. Okay, so there's an interesting story of starting a company called 360 Degree Digital Marketing.
So you guys know about Joe Stock and all the blogs, and also I started my company with a small investment of 500. Okay, so you guys understand आप 500 से कैसे start कर सकते हैं? You always have some questions. Okay, the people are students ask me, sir, 500 से कैसे company start कर सकते हैं? Because you know that starting a company is like a bigger investment, right? A bigger investment in terms of technology, in terms of all the other stuff. So yes, there is this interesting story about 500 rupees. Okay, so what happened is I just went to my जैसे मेरा ये 5th semester खत्म हुआ था, I went to my home and there was a expo. There is a lot of companies. Expo जो बोलते हैं हम लोग, expo लगा हुआ था. Lot of different companies has participated there. And what I did is I just went to the stall. Okay, I just talked to the people. I tell them about digital marketing. This is how you can do the marketing, how you can do the digital marketing, how you can expand your business in terms of the technology, in terms of internet. So I just explained them. So to be frank, it was like I just went approx 30 to 40 stalls and I tell them the concept. This is what I'm doing and this is how digital marketing you can do. And trust me, the people are more interested about it. Okay, so what I found is they were interested to expand their business digitally. Approx, if I talk about, I made 40, I just visited the 40 stalls, and apart from them, I got a 10 to 15 people who are interested about digital marketing, and 5 से 6 लोगों ने तो they have given me the visiting card and they tell, sir, please come to my office, we like to discuss more about it. Okay, so from an idea, so it was just an idea, I discussed with the people and they want to execute that idea. Okay, मतलब they want to move their business into digital. So it was like a great stuff for me because it was just an idea and people who used to call me, sir, आइए हम discuss करते हैं. And then I came to my home. I said, I tell my parents that this is how मैं stall में जाके I tell people about digital marketing and they were interested about it. And many people have called me their office to so that I can explain more about the services and what I can do for them as a digital marketing, right? So my mother has like my father told me that if you're going for all this stuff, आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक ऑफिस चाहिए, उसके लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड देन यू टॉक टू द पीपल, यू टेक द प्रोजेक्ट, आप एक प्रपोजल होता है. सो ही एक्सप्लेन द बेसिक थिंग बिकॉज माय फादर इज अ बिजनेसमैन, so my father is a transportation businessman, so he just explained me about how to start the things and everything. So second day I took a 500 rupees from my mother. और हाँ, interesting story is my father has a उनका खुद का ऑफिस था और ऑफिस था. सो आई टेकन द ऑफिस, मेरे फादर का जो ऑफिस था मैंने उसको लिया, एंड देन आई जस्ट प्रिपेयर विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड and visiting card, letterhead on this stuff so that I can take the project. So मेरा basic aim क्या था? Projects लेना. Okay, so when I went to different offices, I explained them about concept. So I was more curious, more interested to go ahead. So then I started visiting different offices. I just in 5 days I visited approx 70 to 80 offices with the same concept, and the people started liking it. Okay, so they liked the concept. And now I get more confidence on my concept and my ideas. Okay, so now I get clear what I have to do, and I understand the market response. Okay, the market response is good, people like it, but yes, meanwhile there's a lot of things that will leak in from my end because I was very small. I was just the age of 21. Okay, so people will understand ये 21 साल का क्या करेगा. Okay, so because if I have to talk to directors and CEOs, they reach like they have more experience, more expertise in their domain, and they know the industry is better. So but I keep on learning. So I got a good response, but initially there was no project that I received. So after 1 month I started promoting my company. Okay, so I made a website, I made a digital presence of my own company, I started promoting my company. So when I started promoting my company, people know about it. So when I promoted in social media, when I promoted my WhatsApp, when I promoted my circles, people came to know that yeah, he's good in digital marketing. He started this company that is called 360-degree digital marketing, and then they called me for the project. Okay, so what happened is after 2 months, I have 2 or 3 projects. So when you got some work, 2 or 3 projects, I start working on it.
Okay, and after 5 to 6 months, I have almost 10 to 15 clients. Some of the clients from international, I have major clients from, I have 2 or 3 clients from USA also, and Indian clients also. So I started promoting my company. So when I started promoting my company, people are like inquiring for the services. And so in this way, I think so 6 months, I have 10 to 15 projects and everything is settled. And eventually I have a good knowledge. So at that time I was in college. So during my college time, I have done all these activities. I started means after college times, I used to do meetings. I need to take the project. I started working on the client's projects and all. So if I talk about after a year, this was a time from third year ending to fourth year. So within a year, 1 year, my total revenue was 10 lakhs. Okay. So 10 लाख का business मैंने college में रह के एक create किया था. And after the college, I got a very good placement. So from the Bangalore itself, the company has offered me a very good like offer. So मेरे पास एक job भी था, मेरा खुद का business भी था. And the job like placement was quite good. Okay, so घर वालों ने बोला कि अच्छा placement मिल रहा है, job ले लो. And when I signed the offer letter, but to be frank, after 15 days, I reject that job. The purpose of rejecting the job is I was doing pretty good in my college, my startups. Okay, so I decided to continue with my company 360-degree digital marketing because somewhat I have believed in myself. मुझे विश्वास था कि मैं better कर सकता हूँ. So I just came to my hometown Vapi, Gujarat, and I started full time. So have office, many full time staffs hire किए, and then after 1 or 2 months, मैंने खुद का institute भी चालू कर दिया. So I was a trainer and I used to train a lot of students. And yes, so from there, the things are working fine. And within 1 or 2 years, I proved myself that why we are best in the industries and work a lot of clients. As ma'am can say, we have more than 300 to 400 clients. Already I work with them. They are from multiple all over Indian clients. Some of them are international clients also. I'm as good at trainer, so I started training a lot of entrepreneurs. So there's a lot of people who has their own business and come to me to get the digital marketing knowledge. And to almost 5 years, the things were good. And now also, the main purpose of life is learning. What I believe is learning is most important thing that take you ahead. I think so. That's a lot of faculties are also in this session. They know that we always upgrade ourselves. Okay. So I think so. हम लोग जब आप लोग जब students को पढ़ाते हैं तो हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं. Okay. So learning is what help us to grow. If I talk about today, I just within 1 month my course is going to complete. I'm doing PG, postgraduate course from IIM Nagpur. It's a digital strategics and marketing analytics. So I learned more apart from digital marketing. Now digital marketing is not a basic thing. It's going to the performance marketing. The expectation of the company is high. Okay. So we are doing the pretty big projects. If I talk about, we have some of the recognized clients all over the India. So it has been happens in 5 years. And yes, now I'm in Mumbai. We have another office in Gujarat, and soon I'm coming with 1 or 2 more startup ventures that are going to be somewhat big. And yes, this is all about me and my story. Okay, so you guys know this is a very basic thing. I just keep on working my passion, my interest. I can work 10, 12 hours, 15 hours because this is what I love. Okay, so when you love something, when you love. Yes, sir. Yes. Sir, can you brief them about how to go for digital marketing? What are the platforms which they should go for and check out the things for starting their own venture? Definitely, sir. Definitely. So if I talk about digital marketing, right? You guys have some innovative ideas in your mind, innovative concept in your mind. कि this is आपके पास बहुत सारे ideas होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये startups करना है. I want some technical product और मुझे I want to go for something else, right? कुछ ideas होंगे या कुछ आपको innovative करना है, कुछ business को आगे बढ़ाना है. So marketing is very important, right? You guys know about Innovative 8 in Chandigarh. So in 2016 मैं वहाँ पे जाके pitch किया था for my one of the startup जो e-commerce में launch कर रहा था. So I did many things and learned from all these. So why digital marketing is important for any startups? अगर मैं बात करता हूँ digital marketing startups के लिए क्यों important है?
सी आपके पास अगर कोई आइडिया है, कोई कंसेप्ट है, कोई बिजनेस प्लान है, तो डेफिनेटली यू गाइस नो टू प्रमोट इट। सी अगर मैं बात करता हूँ, हम इन कॉलेज व्हाट हैपन इज यू गाइस थिंक अबाउट हम कुछ नया करेंगे, ओके हम कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, हम कुछ नया इनोवेटिव लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि मार्केट में एक हमारे प्रोडक्ट करेंगे, बट नया इनोवेटिव कुछ नहीं होता। आप जब भी व्हेन यू गाइस प्लान फॉर समथिंग, आप ऐसा प्लान करिए जो मार्केट में चले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर कंज्यूमर शुड बी हैप्पी और सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, राइट। आपका कंज्यूमर जो प्रोडक्ट लेगा, जो उसको कंज्यूम करेगा, इवेंचुअली ही शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट ही इज गेट, ओके। आपने कुछ ऐसा बना दिया जो आपके कंज्यूमर को चाहिए नहीं, तो क्या मतलब है, आपका प्रोजेक्ट मॉडल फेल हो जाएगा वहां पे। So whenever you plan for something, always look at that things in point of customer point of view. अगर मैं आपके पास मोबाइल फोन की बात करता हूँ, ओके, मोबाइल फोन when it was launched, it was very high, बहुत महंगा था, लोगों की परसेप्शन गलत है। स्मार्टफोन 4-5 साल पहले, मतलब 8 से 10 साल पहले मार्केट में आया था, लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज थी स्मार्टफोन, राइट, अफोर्डिंग ए स्मार्टफोन। आज क्या हो गया, no one is going for this the simple phone, everyone has a smartphone. The market changed gradually because consumer like that product. आज कंज्यूमर मोबाइल फोन को पसंद करता है, इसके लिए उस पर डिपेंड कर जा रहा। इफ यू वांट टू सी द बेसिक थिंग्स ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आओ जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेटर बना सकता है, उसके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, उसके लाइफस्टाइल को इजी कर सकता है, उसको इजी अडॉप्ट कर सकता है। अगर आप टेक्निकल में कोई चीज लेके आ रहे हो और जो टेक्निकल स्टफ आप बात कर रहे हो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। मेक इट सिंपल, मेक इट इजी सो दैट कंज्यूमर कैन यूज इट। और जो आसान है, बिकॉज सी एवरीवन हैज लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। आप कुछ ऐसी चीज कंज्यूमर को, अभी मैं जूम मीटिंग की बात कर रहा हूँ, व्हाई वी आर कनेक्टेड विद जूम मीटिंग। Previously, what I have to do is, if I have to take these sessions, मैं आपके कॉलेज में आता, I have to like one day I have to travel, I have to come to your college, then do a session. After session, I have to come. So I have to, एक दिन मेरा पूरा वहाँ पे जाता. I have to like give 1 day or 2 days for this session. But this happens in the 2 hours, right? तो हम लोग Zoom meeting में connect हुए, there is a link, you guys can understand. और Zoom meeting बहुत easy है. I don't think you require some of the big technical stuff. Right. Let's talk about one thing. कंप्यूटर जब बना था, so you guys know about it. एक पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा बना था, right? It was very big size. It was size in our rooms. एक रूम है उतने, उससे बड़ा साइज था. Then what happened is gradually उसमें lot of innovative ideas होने लगे, उसको छोटा बनाया गया और छोटा बनाया गया और छोटा बनाया गया. Now it has come to the even laptop size. You can carry somewhere. आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो. अगर मैं बात करता हूं कि आपका कंप्यूटर के साइज का होता है, तो क्या आप लैपटॉप यूज करते हैं? नहीं यूज करते। यू गाइस आर नॉट गोइंग टू यूज दैट टेक्नोलॉजी बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी को बहुत सिंपल, बहुत अच्छा बना के आपको दे दिया, आप यूज कर रहे हो। इसी तरह अगर आप किसी बिजनेस को, किसी आइडियाज को बना रहे हो, तो पहला आपका कंज्यूमर माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू थिंक एज पर योर कस्टमर, यू डोंट थिंक एज योर बिजनेस ओनर। आज में देखो, 2 परसेप्शन होता है। आज मेरा जो मार्केटिंग प्लान है, रिसेप्शन में अपनी कंपनी के लिए बनाता हूँ। जो प्लान स्ट्रेटेजी कंपनी बनाऊंगा, सो कंपनी कैन प्रमोट इट एंड देयर रेवेन्यू आरओआई कैन बी बेटर। सो मैं अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ से भी सोचता हूँ, तभी मैं उसको बेटर बना सकता हूँ। सो व्हेनेवर यू थिंकिंग अबाउट एनी प्रोडक्ट, थिंक एज अ कस्टमर परसेप्शन। आप एक कस्टमर माइंडसेट के साथ सोचना कि अगर मैं कस्टमर हूँ और ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा तो मैं लूंगा कि नहीं, और अगर आपको आंसर मिल जाता है, then you can go ahead. So this is how you need to plan and you have to think about whenever you're starting something, right? अब समझो आपने start तो कर लिया, right? You got a product, you got everything. Now the main thing is marketing. See, marketing and sales, these are the 2 important factors of any business. अगर आपका marketing और sales बहुत अच्छा है, then only you can going to be a boost in the market. आप कितना भी अच्छा बना लो, to be frank, बहुत innovative, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, अगर मार्केटिंग आपको सेल्स करने नहीं आ रहा है ना, that's no use. आज हर एक चीज बिकती है। If you talk about everything, Byju's, do you have a better concept of technology or teaching? I think so. There is a faculty. If they adopt Byju's are not that good. Byju's are not that good, okay? But Byju's are doing the tremendous business. कहाँ से कर रहे हैं? They are salesperson, they are business development, they are marketing strategies higher because they spend lot of money on that. जिसको नहीं भी चाहिए उसको भी वो दे रहे हैं। They hire a person with a 9 lakhs package of a salesperson. No one can ever do that.
राइट? सो सेल्स एंड मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप किसी भी चीज को बेच सकते हो अगर आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रांग हो। So after developing the product, you guys should be have a better idea about the product and like sales and marketing. So marketing में there is a digital marketing. If I talk about now, every business they contribute 50% of their business to digital. क्या करते हैं? 50% अपना business digital contribute कर रहा है, right? So how we have to do the digital. See, digital में अगर आप digitally अपने business को expand कर रहे हैं तो पहला आपका digital presence important है। Digital presence क्या होता है कि आप इंटरनेट में आपका business list होना चाहिए। लिस्ट होने के लिए मतलब आपका गूगल माई बिजनेस होता है, गूगल मैप में या गूगल माई बिजनेस, ये फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है, गूगल माई बिजनेस में। वंस योर बिजनेस गॉट रजिस्टर्ड इनटू द गूगल माई बिजनेस, उसके बाद क्या होगा, आप एक बेसिक वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट में आपके पास पर डिटेल होना चाहिए। सी, वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे आप अपने बिजनेस के लिए ऑफिस रखते हैं वैसे आपके लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट है। सो वेबसाइट इज योर ऑनलाइन होम where people can visit, they can see your product and services। अगर उनको कोई डिटेल चाहिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। So best part of the website is आपके पास 24 आवर्स आपके लिए काम करता है। रात को 2 बजे भी कोई वेबसाइट आपके ओपन करके देखेगा, डिटेल्स आपसे इंक्वायरी करेगा, सेकंड डे ही विल गेट द इंफॉर्मेशन। तो वेबसाइट इज ऑनलाइन प्रेजेंस, राइट? अब वेबसाइट बना लिया आपने, गूगल माई बिजनेस रजिस्टर कर दिया। अभी कोई गूगल में सर्च करेगा योर वेबसाइट, योर नेम कैन बी कम, ही कैन लाइक कम बैक टू यू। ओके, फिर क्या हो गया, उसके बाद आपने सोशल मीडिया इज वेरी एडवांटेज बिकॉज सी initially everyone is active on social media, even a middle class, even a high class, even a luxurious class, and there's a lot of social media। LinkedIn की बात करते हैं, प्रोफेशनल B2B नेटवर्क आपके लिए अच्छा है। Instagram is very youth targeting, Facebook आपके पास रैंडम ऑडियंस मिल जाएगी। तो आप Instagram में अपने बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। आप अपने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करिए Facebook, Instagram, LinkedIn में, and start promoting on it। आप बताइए लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिजाइन पोस्ट के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इट। आप कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, आप कुछ नया लेके आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का वीडियो बना दीजिए। तो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू डू बेसिकली ऑन सोशल मीडिया। तो जो सोशल मीडिया आपके पेजेस देखेंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एंड द पीपल हैव द रिक्वायरमेंट्स, दे विल कांटेक्ट यू। ओके, सो योर सोशल मीडिया, योर वेबसाइट, योर गूगल माई बिजनेस, दिस आर द बेसिक थिंग्स। अब इससे थोड़ा और एडवांस जाते हैं तो आपने एसईओ कर लिया। एसईओ मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मींस if someone is looking for that particular product on Google, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। he will call you। suppose let's talk about अगर मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, राइट? सो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़, ये कीवर्ड है और इस कीवर्ड के लिए मैं अपनी वेबसाइट को रैंक कर देता हूँ। तब क्या होगा कि मेरी वेबसाइट फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आएगी, तो पीपल आर गोइंग टू कॉल मी। नाउ एवरीवन इज, अगर आपको आज कुछ भी चाहिए आप गूगल पे सर्च कर दो। अगर आपको कोई क्लासेस चाहिए, आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बेस्ट कॉलेज इन चंडीगढ़ आप देखोगे, बेस्ट कॉलेज इन पंजाब, व्हाटएवर द लोकेशन, राइट? बेस्ट कॉलेज इन इंडिया आप देखते हो, आपको गूगल में वेबसाइट दिखेगी। सो दिस आर नॉट दी ऑर्गेनिक। हम लोग इस अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं सर्च इंजन पे। तो जैसे आपने अपनी ब्लॉग, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक किया, तो पीपल आर स्टार्टेड गेट, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, आपके प्रोडक्ट और सर्विस लोग देखेंगे। If they're interested, they're going to call you or they're going to visit your websites। और अगर आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो वहां से आपको एक रिकरिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ये तो आपका बेसिक्स डिजिटल प्रेजेंस है। अब आपको और एक्सपांड करना है तो आप एड्स पे लगाओ। आपने फेसबुक, सोशल मीडिया में एड डाल दिया, एड्स आप जाके फेसबुक में बना सकते हो, ठीक है। सो द एडवांटेज ऑफ एड, इट्स अ टारगेट ऑडियंस, टीजी, दैट इज टारगेट ऑडियंस की बात करता हूँ। अगर आपका लोकेशन, आपका बिजनेस पर्टिकुलर लोकेशन में, और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, पहले आप अपने टारगेट ऑडियंस को वेरीफाई करिए, मतलब मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। इट मींस अगर मैं बिजनेस 20 किलोमीटर में करता हूं, मेरा जो यूथ टारगेटिंग है उसका एज ग्रुप क्या है, वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, व्हाट इज देयर बिहेवियर, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट। तो आप पहले इसको बना लीजिए। और जब आप ऐड बनाएंगे, सो यू जस्ट पुट ऑल दिस थिंग्स कि लोकेशन कितना रखना है मुझे, किसको ऐड दिखाना है, कौन से बिहेवियर, कौन से इंटरेस्ट को टारगेट करना है। तो आपका जो पर्टिकुलर ऐड है वो उसी आपने जिसको टारगेट किया उनके पास ही जाएगा। सो अगर उनके पास आपका ऐड जा रहा है तो दे आर द इंटरेस्टेड पीपल हु वांट दैट पर्टिकुलर सर्विस और पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो दे आर गोइंग टू मेक इंक्वायरीज, दे आर गोइंग टू इंक्वायर यू, कॉल यू और समवॉट मैसेज यू, ठीक है। तब आपको एक लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो लीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आप गूगल एडवर्ड्स पे जा सकते हैं। गूगल ऐड क्या होता है, गूगल में भी आपने सिम ऐड बना दिया,
इट्स नॉट इजी टू रैंक ऑन सर्च इंजन। तो आपने क्या कर दिया, बेस्ट कॉलेज इन चंडीगढ़ में अपने अपना ऐड डाल दिया, कीवर्ड्स के थ्रू डालते हैं इसको, राइट। आज मैंने हमारे कॉलेज का ऐड डाल दिया, कीवर्ड रहेगा बेस्ट कॉलेज इन चंडीगढ़। अगर किसी ने बेस्ट कॉलेज चंडीगढ़ देखा तो मेरा ऐड सबसे ऊपर आएगा। तो डेफिनेटली क्या होता है, लोग सर्च करते हैं, मेरे ऐड पे जाएंगे, दे विल कॉल अस, ओके। और जब वो कॉल करेंगे हमारे पास लीड्स आएगी। आफ्टर गेटिंग द लीड्स, आफ्टर गेटिंग द इंक्वायरीज, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दैट। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, आपके सेल्स की टीम प्रॉपर नहीं है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज द बिजनेस, ओके। सो यू नीड हैव अ प्रॉपर सेल्स टीम। कीवर्ड्स का अगर आप बता पाए, लाइक कीवर्ड्स कहाँ पे डालने एंड हाउ, लाइक इन द गूगल सर्च ओनली? Yes, sir. So what happened is, see, basically this keyword, agar there is a Google AdWords, there is a tools called Google AdWords. You have to go to Google AdWords, create your account. आपको अपना account बनाना होता है। फिर वहां पे multiple ads की strategy होते हैं। Like आप sales ad बनाना चाहते हैं, आप display ad बनाना चाहते हैं। Sales वाले क्या होते हैं कि अगर किसी ने आपके keyword, वहां पे हम लोग keyword डालेंगे back end में। हम लोग keyword रिसर्च करते हैं कि these are the 10 keywords, इसके इतने searches हैं, इसका इतना competition है। Okay, suppose if I top colleges in India is a keyword, इसके searches कितने होंगे? There is a more than lakhs of searches every month. इसका competition क्या है? This, और इस keyword का costing कितना आएगा वो भी हमें बता देता है। That's called keyword research. Okay, so once you guys do the keyword research, हमारे पास 100 keyword का research मिल जाएगा कि हाँ, these are the standard keywords, इसको इतने लोग search करते हैं, इसका इतना costing जाएगा और इसका competition क्या है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप जब ऐड क्रिएट करेंगे उस 100 कीवर्ड्स को अपने ऐड में डाल देंगे। टाइटल, डिस्क्रिप्शन आपने सब बना लिया। फिर व्हाट यू हैव टू डू इज, आप ऐड को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा, आपको एक पर डे बजट रखना पड़ेगा, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज। व्हाट इज द बजट? आप जितना बजट रखेंगे और जो आप कीवर्ड टारगेट करेंगे, अगर वही कीवर्ड, और दैट इज आल्सो पर्टिकुलर लोकेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ चंडीगढ़ वाले सर्च करें, उनको दिखे तो वही दिखेगा, पैन इंडिया से ट्रैफिक आपको नहीं आएगा, राइट। सो आपने जैसे ऐड बनाया, if someone is searching for that particular keyword, they are going to land to your particular ad. और जैसे आपके ऐड पे जाएंगे, आपके पास आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, if they are interested, they will basically inquire for that particular product. So Google AdWords is complete paid and SEO is organic. SEO के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कैसे वेबसाइट को रैंक करते हैं। Sir, okay. Sir, okay, sir. Yeah. Ajit is also want to ask some questions. Ajit, you can unmute. Yes. Can you explain SEO in digital marketing, right, Ajit? So, okay, let me talk about what is SEO. Yes, Ajit. Yeah, Ajit, I understand the question. Can you explain SEO in digital marketing, right? Yes. So, what is SEO? First of all, SEO means search engine optimization. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज, आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करना है पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप इन योर वेबसाइट यू आर गोइंग टू फिक्स द कीवर्ड, यू आर गोइंग टू फिक्स द टाइटल, हर पेजेस का होम पेज और कोई भी जितने पेजेस है आप उस पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन सेट कर देंगे, उसके अंदर फोकस कीवर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर आप अल्टीमेट होता है इंडेक्सिंग हो जाएगा, वेबमास्टर में सबमिट करना है, गूगल एनालिटिक्स ऐड करना है, सोशल मीडिया पेजेस ऐड करने हैं। तो ये सब आपका ऑन पेज है। एक बार आपने ऑन पेज कर दिया, आफ्टर ऑन पेज गूगल आपका जो वेबसाइट है सर्च इंजन में इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स मतलब सर्च इंजन में दिखना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, समझो आपकी वेबसाइट 5th और 4th पोजीशन पे आ रही है। अब रैंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू ऑफ पेज सबमिशंस। ऑफ पेज सबमिशंस में क्या होता है, आपको लिंक बनाने पड़ते हैं। जैसे आपके पास अलग क्लासिफाइड सबमिशंस हो गए, आपको अपनी वेबसाइट का डाटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट अलग अलग वेबसाइट में सबमिट करना पड़ता है। जैसे आपका हो गया क्लासिफाइड साइट, सोशल बुक मार्किंग, देन आपका सर्चिंग सबमिशन, टैग सबमिशंस, गेस्ट पोस्टिंग, ये अलग अलग सबमिशंस होते हैं। आपको गूगल में मिल जाएगा लिस्ट ऑफ क्लासिफाइड साइट्स। आप वेबसाइट निकालो, हर वेबसाइट में जाके, क्लासिफाइड साइट्स क्या होती है जिसमें हम लोग ऐड पोस्ट करते हैं, जैसे जस्ट जाइल हो गए, सुलेखा हो गई, ऐसी साइट जिसमें आप अपनी वेबसाइट का ऐड डाल सकते हो, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग साइट्स, सोशल मीडिया साइट्स, हम लोग सोशल मीडिया साइट्स में जाते हैं, अपनी वेबसाइट का कंटेंट वहां पे पुट करते हैं, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, आप इसको रेगुलर
15-20 सबमिशंस कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करते जाएंगे ना, यूजुअली आप क्या देखेंगे कि आपकी पोजीशन इंप्रूव होने लगते हैं। समझो आपकी वेबसाइट 4th पोजीशन पे, तो आफ्टर 1 मंथ तो 3rd पे आ जाएगी। आप ग्रेजुअली और सबमिशंस, अच्छे सबमिशंस करोगे तो 1st, 2nd और मतलब ग्रेजुअली आपका पोजीशन इंक्रीज होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट? समझ में आ गया अजीत? Saurabh, you can ask if you have any doubt. Hello. You can ask. Okay, first of all, good morning, sir. Yes. Yeah, good morning. Yes. I'm Saurabh from BSc Agriculture 2nd semester. Sir, Okay. my question is regarding from your point of view, what are the challenges do you find at the starting of interns? Okay, so starting of my career, right? When I start my career, मुझे क्या-क्या problems आए, that is you want to know about it, right? Yes, sir. ठीक है. So see, starting of the career अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे बहुत challenges थे. 1 साल बाद भी आए, 2 साल बाद भी आए, 3 साल आज ज्यादा challenges आते हैं. Okay, तो challenges are everywhere. अगर आपको लगता है कि you become a successful, आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के पैसे आएंगे तो it's not possible, right? आई थिंक आपकी जो फैकल्टी है जो दिनों बेटर कि हमें लाइफ में हर फेज में चैलेंजेस आते हैं। जब स्टार्ट करते हैं छोटे चैलेंजेस होते हैं, उसकी आदत हो जाती है, और आज बड़े बड़े आते हैं तो उसको फेस कर सकते हैं। तो नथिंग इज गोइंग टू बी इजी एंड नॉट, कोई भी चीज इजी नहीं होती, राइट? आज आप जितना सक्सेसफुल होंगे आपके लिए उतनी चीजें हार्ड हो जाती है। बट यस, अगर मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में मेरे पास ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आते। आई वाज वेरी मोटिवेटिव एंड आई वाज वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है? I was very positive, very focused on my work. तो challenges क्या आते हैं किसी, जैसे मैंने आपको बताया, I have visited बहुत सारे hundreds कंपनीज में विजिट किए थे, I talked to many people, but मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। Okay, so this is a challenges if you say कि एक चैलेंज था बट मेरे लिए लर्निंग थी। I always take challenges as a learning and I try to improve that. तो देखो मुझे एक चीज समझ में आया कि मैं 100 जगह पे आई विजिटेड टू 100 पीपल टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, बट देयर वाज समथिंग दैट वाज लैकिंग बिहाइंड मी। वहां पे क्या हो रहा था कि समवॉट आई एम नॉट एबल टू कन्विंस देम, और समवॉट मुझे लग रहा था कि द एक्सपेक्टेशन इज हाई और मुझे कुछ इनोवेटिव लाना चाहिए लोगों को, लाइक सी मुझे कुछ अच्छा, सो आई इंप्रूव विद दैट थिंग्स। ओके, मैंने अपने आप को इंप्रूवमेंट लिया एंड इंप्रूव माय सेल्फ एंड आफ्टर 1 मंथ आई स्टार्टेड गेटिंग द प्रोजेक्ट। सो चैलेंजेस जैसे आप बोल रहे हैं इवन इनटू एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर में स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास चैलेंजेस आएंगे, फार्मर्स नहीं कन्विंस हो रहे हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, या बेसिकली आपको लर्निंग के इश्यूज आएंगे, या कहीं पे आपका को फाउंडर है आप जिसके आप डिपेंड है वो चला जाएगा, मार्केट फ्लक्चुएशन हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस थे, द पीपल्स आर लाइक बिजनेसेस बंद हो गए। Then also lot of companies they started, उन्होंने अपना कंपनी बंद नहीं किया, they went to online, okay, उन्होंने कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला और फिर आज अपनी कंपनी को लेके जा रहे हैं। तो चैलेंजेस आर एवरीवेयर, ओके, एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। कभी आपका स्टाफ चला जाएगा, कभी आपको फाइनेंशियल बर्डन आ जाएंगे, कभी आपके वेंडर्स के पेमेंट नहीं आएंगे, ओके, और आप जब स्टार्टअप्स करते हो तो आपके फेल भी हो जाओगे। अगर आपने स्टार्ट किया आप फेल हो गए, so that's fine. Failure is a success. Okay. Let me give the example. There is a startup called Picanto. Picanto एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी हमने स्टार्ट किया था हमारे कॉलेज में। So this was startup जो मैंने स्टार्ट किया था। Okay, हमने क्या किया कि हमारे कैंपस में जितने भी हमारे पास ये थे अलग अलग कैंटीन वाले थे या रेस्टोरेंट से हमने सबसे टाई अप कर लिया। एंड फिर हम लोग क्या करते हैं अपने कॉलेजेस में लाइक फ्रॉम द हॉस्टल में हम आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, और जो नियर बाय शॉप्स वाले तो आपको जाके फूड डिलीवरी वाला सेम कॉन्सेप्ट था। उस टाइम पे जोमेटो से इतना आगे नहीं आता, ठीक है। तो हमने 2 साल स्टार्टअप्स को काम किया। आई लेफ्ट द स्टार्टअप बिकॉज आई स्टार्टेड 360 डिग्री। सो जो मेरे साथ 4 फ्रेंड्स थे मेरे जिन्होंने स्टार्टअप में काम किया था, आज उसमें से वन ऑफ देम वाज इन जोमेटो एंड इज अ वेरी गुड लाइक अच्छी पोस्ट पे, ठीक है। किसी ने टेक्निकल में एप्लीकेशन बनाया था, वेबसाइट बनाया था, ठीक है, आज जो एज अ वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपर में चला गया। तो जब आपने कुछ स्टार्ट किया आपने उससे सीखा, और वो लर्निंग कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाती है, ठीक है। आप फेल होते हैं तो आप उसको समझिए मैं फेल क्यों आऊं,
अगर वो एक्सटर्नल सोर्सेस वजह से फेल हुआ कि मेरे अंदर कुछ कमी थी, आई एम नॉट एबल टू फुलफिल व्हाट इंडस्ट्रीज वांट, तो आप उस चीजों को जज करें. यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, एंड व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स यू अंडरस्टैंड कि आगे मुझे फेल नहीं होना. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू दैट थिंग्स यू डू इन अ परफेक्शन वे, ओके, सो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट. तो फेलियर और आपके पास जो बोलते हैं हर्डल्स, ये सब आपको सिखाता है. अगर फेलियर ना हो तो लर्निंग नहीं होगी. ठीक है, अगर मेरी लाइफ में सब अच्छा है तो जो अच्छा चीज है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, बहुत सारे लोग दे अर्न गुड मनी, ओके, दे हैव एवरीथिंग इन लाइफ, देन आल्सो दे आर नॉट हैप्पी. क्यों? बिकॉज देयर लाइफ इज नॉर्मल, राइट. आज मैं आपकी बात करता हूँ, यू गाइस इन अ गुड कॉलेज, आपको रेगुलर घर से पैसे मिल रहे हैं, आपको जो चाहिए आपको सब कुछ मिल रहा है. आपको क्या लगता है, अरे कौन सी बोरिंग लाइफ है, ठीक है, अरे कॉलेज में क्या यार बोर हो गया, ये क्या कॉलेज है, कोई ऐसा है. बट टॉक अबाउट द पीपल, टॉक अबाउट द पीपल जो कभी कॉलेज ही नहीं किया. ओके, टॉक अबाउट द वेंडर हु इज रनिंग द, आपके बहुत अच्छे हैं बट नॉट द पेरेंट्स, दे आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्टेबल कि कॉलेज अफोर्ड कर सके. आस्क टू देम कि वो कैसे फिर अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं, राइट. उनके लिए ये चैलेंजिंग लगता है लेकिन आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, राइट. A person, if you talk about a person who parents are billionaire, उनको लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, but they have a lot of things. आपके पास जो है ना, आप उस रिसोर्सेज को यूज करें, राइट. नाउ इन कॉलेज लर्न अबाउट द टेक्निकल स्टफ, लर्न अबाउट योर फैकल्टीज. आज आप अपने फैकल्टी से 100 क्वेश्चन पूछेगा, मना नहीं करेंगे, ओके, दे विल आंसर यू. बट एट अ टाइम जब आप कॉलेज छोड़ देंगे ना, आपके पास कोई फैकल्टी गाइड क्लिक नहीं होगा, आपके पास कुछ भी नहीं. यू आर द लोन पर्सन, यू हैव टू टेक एंड एवरीथिंग. So you got the resources, you got everything, you have to just use it in a wise way, right? So did you got the question? Answer मिला उसका? Yes sir. Good morning, Yes. sir. My name is Jhanjeri Mohali. I'm in Yes. BSc Agriculture, second semester. Sir, how can digital marketing influence agriculture sector? Definitely. So आप बात करें कि एग्रीकल्चर में डिजिटल मार्केटिंग को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट. So see, now what happened is, when सबके पास स्मार्टफोन है, right? Every people are using a smartphone. Even the farmers are using a smartphone. और गांव में भी सबके पास स्मार्टफोन है. So when you start something, अगर एग्रीकल्चर में आप एजुकेट कर सकते हैं, आप एजुकेट फार्मर्स को कर सकते हैं with your concept and ideas. I think so there are lot of agriculture using digital marketing, right? बहुत बड़ी कंपनीज हैं, they pesticides and all the prepare जो पेस्टिसाइड्स फार्मर्स के लिए बनाते हैं. दे हैव एन एप्लीकेशन, फार्मर्स यूज कर रहे हैं, फार्मर्स को गाइड करते हैं, दे टेक द डाटा फ्रॉम देयर, ओके. सो नाउ एवरीवन इज यूजिंग द सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया इज अ बिग गुड वन ऑफ द लाइक, आपके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है फार्मर्स के पास जाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, राइट. और ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग मीडियम, अगर आप फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर विलेज में आप कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. आप उनको बुलाइए कैंप में, उनको बताइए व्हाट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर देयर, व्हाट इज योर इनोवेटिव कांसेप्ट. ठीक है, आप फार्मर्स को एजुकेट करिए, आप बैनर्स लगाइए, होर्डिंग लगाइए, आप डिजिटली सोशल मीडिया पे उनका एक ग्रुप बना दो, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बना दो जिससे आप मैसेज सर्कुलेट करो. तो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो टेक इनटू द डिजिटल फॉर्म. तो ऐसा नहीं कि डिजिटल इज ओनली अ मीडियम ऑफ मार्केटिंग, देयर इज अ ऑफलाइन मीडियम, देयर इज अ क्लाउड, देयर इज अ गैदरिंग ऑफ अ पीपल, देयर इज अ इवेंट दैट यू कैन डू. सो यू हैव टू गो विद अ मल्टी चैनल मार्केटिंग फॉर देम. Right, Ajit? Yes. Yes sir. Yes. Sir, how do I promote agriculture product? So what type of product you have? आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है? Pesticides sir. पेस्टिसाइड्स, राइट. पेस्टिसाइड्स आप फार्मिंग के लिए बनाते हैं, राइट. Yes sir. सो जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव अ पेस्टिसाइड्स बिजनेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन इज, आपको डाटा लेना पड़ेगा फार्मर्स के, कलेक्ट द डाटा ऑफ द फार्मर्स हु आर यूजिंग द पेस्टिसाइड्स ऑफ पर्टिकुलर विलेज, राइट. अगर मैं बात करता हूँ 5 विलेज में, आपने फार्मर्स के डाटा ले लिया, दिस आर द फार्मर्स हु यूज द पेस्टिसाइड्स. आपको एक बिजनेस मॉडल बना लिया कि मेरे पास 100 फार्मर्स है, मुझे 100 फार्मर्स को रीच करूंगा, मेरा इतना रेवेन्यू, इतना टारगेट होगा. फिर आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जाना है. उस आप फार्मर्स का एडवांटेज क्या होता है ना, आप उनको गैदरिंग इजी कर सकते हो. आप एक इवेंट रख दो, गांव में एक अच्छा सा इवेंट रखो, उनको बुलाओ, उनको एजुकेट करो कि आप पेस्टिसाइड्स क्यों यूज करोगे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, आपको ये पेस्टिसाइड्स क्यों लेना चाहिए. सी फार्मर्स आर वेरी वेरी एजुकेटिव. अगर उनको एजुकेट करोगे, आपका प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है, तो उनको हेल्प करेगा, दे आर गोइंग टू टेक इट.
राइट। तो आप एक इवेंट्स रख दो, गैदरिंग कर दो, जगह जगह बैनर लगा दो, होर्डिंग लगा दो। सो दिस इज व्हाट इनिशियली यू कैन डू। एंड लेटर ऑन आप क्या कर सकते हैं, आप एक व्हाट्सएप पे उनका ग्रुप बना दो, सोशल मीडिया में उनको ऐड कर दो, और उसके बाद आप अपनी जो भी प्रमोशन एक्टिविटीज है उनको दिखाते जाओ। आपके कुछ नए ऑफर्स आ रहे हैं, आपका प्राइस कम हुआ है, आप वो भी उनको भेजो। तो सी फार्मर्स एंड ऑल कम्युनिटी होती है, आप उस कम्युनिटी को टारगेट कर लो, आपका काम हो जाएगा। आप फिर एक्सपांड करना है सेम इसी तरह से। इवन आप जो फील्ड्स में मार्केटिंग वाले, लाइक यू कैन हायर सम ऑफ द सेल्स पर्सन हु कैन, एक सेल्स पर्सन जो 3 गांव को हैंडल करेगा, वो 3 गांव में सब लोगों को एजुकेट करता रहेगा, इवेंट्स करेगा, प्रमोशन करता रहेगा, और आपका सेलिंग्स का ध्यान रखेगा। So this is how you can go ahead, right? Yes, any other question? Raise your hands. Anyone want to ask any question? They can raise your hand. Yes, I think now there is no question. Sir, Okay. okay. Any other faculty member want to ask any question? Deepshik. Sir, how did you decide where to establish your company? What are the things we have to consider in our mind? Okay, so the question is basically, if I want to set up something, how I can decide which location is good. And Yeah. Yes, I totally understand, sir. So sir, for that part you need to we have to do the R&D, because see sir, in every business, whenever we do business, R&D is very important. You don't need to jump at that point. आप एक business analysis करिए, 15 days 1 month complete have analysis कि अगर ये मैं business करता हूँ, what is my target audience, मुझे जो लोग यहाँ पे हैं, what is the response that I'm, if I talk about digital marketing. I started my company in Gujarat. There's a city called Vapi. Vapi is a city where a lot of industries are there. ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे मतलब a lot of chemical industries are there, pharmaceutical industries are there. So I started their business. After 3 years, I did a well, there was a monopoly which I created in my market. If everyone wants to take the digital marketing, they have to visit 360-degree digital marketing. There was a monopoly in terms of training, in terms of digital marketing. But now what happens, sir? I used to, my revenue was 5 to 6 lakhs per month. Okay. So somewhat after 3 years, I think that I was stuck to a particular location. So after 3 years, I decided to move, because see, what expansion, what I'm looking for is not able to get. आप एक बिजनेस में एक लोकेशन मैंने बिजनेस किया जहाँ पे I did my monopoly, I was very good, but मेरे पास client base कभी कभी कम थे. Okay, then I moved to Mumbai. The purpose of moving to Mumbai is I was looking for more clients, more corporate clients, like now we have some of the corporates, SGFC, DCB banks and all these clients. So now my motto, my growth has been changed. So your perception, your business ideas always change when you want to grow something. Starting में establish करने के लिए I was fine with that city. Now I moved to Mumbai. I'm looking for more corporate clients, more, because यहाँ पे head office होते हैं. अगर आप मुंबई में बात करते हो, हर companies की head office है. So when you want to go for the bigger project, you have to come to the head office, you have to talk to them, and they prefer the location Mumbai itself. Okay. So then we have to consider the location as per the scenario of my product. At what level I have to change the locations accordingly. Definitely, sir. Definitely, sir. So then we can move forward. Definitely. So business always changes, sir. See, whatever I work with top industries also. So everything, nothing is like fixed. Everything is flexible. When you have a turnover of 1 CR, you are a local level business. When you want to expand to 100 CR, आपको अपने बिजनेस प्लान, अपने आइडियाज, अपने लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा. सो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक ऑफ व्हाट एवरीथिंग यू डू, और आपको ग्रोथ भी उसके हिसाब से धीरे धीरे मिलती रहेंगी. सो यू नीड टू थिंक ऑफ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट. इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ 1 CR, आपको 1 CR के लिए मार्केटिंग बजट और सब कुछ एलोकेशन होगा. अगर आपको 100 CR लेके आना, तो आप उसमें मार्केटिंग बजट, सेल्स और सब कुछ इंक्रीज करेंगे, तब जाके आपको टारगेट पूरा होगा. Okay, thanks so business is all about, sir, business is all about your thinking level. Sir, मैं आपको बात करूं, these are big companies, big giants, and these lot of companies, Reliance, HDFC Bank and all these. Okay, I know very well.
इवन इन द पर्सन हु वाज इन मार्केटिंग, रोज उनके लिए चैलेंजेस होते हैं. Now this month we have done 10 CR business, अगले month आपको 15 CR करना है. So you have to make the strategy that going to be work for 15 CR. Okay. So आपके business strategy, marketing plan हमेशा change और upgrade होते रहते हैं. Okay, thank you so much, sir, for your valuable knowledge. And as an entrepreneur, we face a lot of problems, not related to financially also, but lot of challenges also in the field. Yes. So it is a very beneficial, it was a very beneficial session for the students today. And I hope we have learned a lot of things from you. And in future also, we will definitely call you offline in the college also. And this was a wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you for your valuable thoughts. Thank you, sir. Vikas, sir. Thank you, Vikas, sir, for sparing a slot for us, for our faculty members, for our students. Perhaps you have covered your whole story from start, from where you have started and how you move forward. So perhaps students learn from you a lot. So thanks for sparing a slot for us and for our students. Yes, Thanks, sir. And also I have my own book that is Digital Entrepreneur, an Introduction to Digital Marketing. So it's all about digital marketing, introduction to digital marketing. You guys can tag आप उस book को buy कर सकते हैं. You can learn from it. And eventually you can follow me on social media. So even you can search on Google, you can find on whatever social media you use. I'm active on every social media. You can come to social media. If you have any doubt, anything you feel like discussing with me, you can message me on social media. And I don't respond on the call, might be because due to the busy schedule, but I am going to take your questions on social media, and definitely if it's useful, I'm going to answer your questions. Thank you, everyone, and hope you have learned today about digital marketing, and some of you might be motivated to start up your entrepreneurship. As he has told, it is not easy, and you should learn from your failures. That is the takeaway from today, that never give up. And if you have your dreams, make them true, make them realize. Start your ventures, give jobs to others, start making India. That's the task. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Yes. Yeah. Bye. Thank you all of the students and faculty members. Thank you. Thank you, everyone, for joining the session. Thank you so much. Now I'm closing the session.